नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी जय शासन की। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में आरती कपूर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि किसी विषय पर चर्चा के लिए आई हैं। आज की चर्चा का विषय है फेथ। जय गुरु जी आरती आंटी। जय गुरु जी अंकल, गुरु जी को प्रणाम। कैसे हैं आप? हम बोल रहे गुरु जी की असीम कृपा। आंटी, गुड। फेथ के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मेरा पहला सवाल है, फेथ का विश्वास का आधार क्या है? किस बेसिस पे इंसान विश्वास करने लगता है? बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है अंकल ये, और बहुत गहरा भी। फेथ जो है ना, बहुत ही नाजुक सा एक एहसास होता है। एंड जनरली स्पीकिंग, मैं जनरली पहले जनरल आप एक्सप्लेनेशन दूंगी, देन आई ट्राई एंड गो इनटू मोर स्पेसिफिक्स. For most believers, I want to say that faith is grounded in the experiences of divinity, experiencing something divine, a revelation, some inspiration. एंड जब ऐसे इनकाउंटर्स हमारी लाइफ में होते हैं तो विश्वास बढ़ता है. लेकिन अगर सिंपल तरीके से मैं आपका जवाब देना चाहूं, अगर एक लफ्जी, तो विश्वास का आधार सिर्फ एक है मेरी नजर में, वो है गुरु कृपा. अगर गुरु की कृपा नहीं है तो जो मर्जी आपकी आंखों के सामने आ जाए, जो मर्जी आप देखो सुनो, जिस चीज का भी एहसास हो, आप किंतु और परंतु से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. तो जब तक गुरु कृपा नहीं है आपके ऊपर, विश्वास नाम की कोई चीज आपको छू नहीं सकती. और जैसे हम कहते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी एक हम लाइन यूज करते हैं कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर. बिल्कुल ठीक राइट. है। बिल्कुल ठीक सो है। ये एक सिंपल सा मैंने आपके सवाल का जवाब दिया अंकल. जी जी। जी आंटी, बिल्कुल ठीक है आपने। आई अंडरस्टूड व्यू पॉइंट्स आंटी। लेकिन ये कष्ट आना और देर तक कष्ट रहना मानव के विश्वास की परीक्षा तो लेते हैं। ऐसे में फेथ कैसे बनाए रखा जाए? सो जैसे कि मैंने आपको अंकल पहले बोला कि जब विश्वास की बात होती है ना, विश्वास इज फ्रैजिल. और अगर हमें लगता भी है कि हमारा फेथ है, तो लाइफ में जब कुछ उतार चढ़ाव होता है और कुछ अनटूवर्ड हो जाता है ना, तो सबसे पहले क्या हिलता है? हमारा विश्वास. अब इसको हम थोड़ा डाइसेक्ट करके सोचने की अगर कोशिश करें, तो विश्वास क्यों हिलता है? विश्वास इसलिए हिलता है क्योंकि अपने मन में हमने एक चीज का एक इंटेंडेड आउटकम सोच रखा है. राइट. और जैसे गुरुजी भी सरल लैंग्वेज में समझाते थे कि गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि डिजायर्स रखनी बुरी हैं, इच्छाएं रखनी बुरी हैं. गुरुजी इनफैक्ट कहते थे एंजॉय सब कुछ करो, अटैच मत हो. और हम जब आउटकम से अटैच हो जाते हैं, हर एक सिचुएशन की हमने एक इंटेंडेड आउटकम बना के रखी है, और जब करेक्ट। वो आउटकम रियलिटी के साथ मैच नहीं करती ना अंकल, तो हम कहते हैं अरे हमारा विश्वास तो टूट गया, हमारा तो हिल गया. लेकिन हम ये नहीं रियलाइज करते कि why that is happening to begin with is because of our own attachment to the outcome जो गुरु साहब ने हमें सिखाया कि नहीं करना. And by this, I'm not trying to say that one has to become indifferent or you stop caring or you stop doing पुरुषार्थ और कर्म. आप कर्म तो पूरा करो, लेकिन जब आप कर्म उस इच्छा और उस भावना से करते हो कि हे गुरुदेव, हे मेरे भगवान, जिस किसी में भी आप मानते हो, मैं ये कर्म तो कर रही हूं या कर रहा हूं और अच्छे भाव से कर रहा हूं, इसका नतीजा जो भी हो वो आपके हाथ में. तो अगर हम जिसे कहते हैं ट्रूली हमारे अंदर जब सरेंडर आना शुरू हो जाता है ना, उतना स्ट्रॉन्ग फेथ का इंडेक्स भी बढ़ता जाता है. नाउ another satsang that I will share, and this is something that I experienced, and this relates to my father. So when I
found out about my dad's stage 4 cancer. और ये बात मतलब that date is etched in my heart. 15 मई 2020 मुझे आर्टेमिस हॉस्पिटल की एक संगत, बहुत प्यारी संगत है, नीलम आंटी का एक टेक्स्ट आता है कि अंकल, यस यस, कि अंकल की तबीयत खराब हो गई थी, हम उनको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं और ये इनके स्कैन के रिजल्ट्स हैं, डॉक्टर को कुछ नजर आ रहा है, बट आई वांटेड टू सेंड यू, आप भी एक सेकंड रीडिंग करा लो, आई थिंक द डॉक्टर कैन सी समथिंग। बस इतनी सी बात। एंड इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल अंकल, 2020 15 मई वाज अ फ्राइडे। इंडिया में शाम हो चुकी थी, यहाँ सुबह हुई थी, वो मैं टेक्स्ट देखती हूँ एंड यू नो अमेरिका में वीकेंड का बड़ा रिवाज होता है, वीकेंड में एवरीबडी जस्ट शट्स डाउन एंड यू आर नॉट वर्किंग एंड that kind of stuff. So anyway, I sent those images, those reports to an oncologist friend of mine, and I also told her कि किसी radiologist से भी ये read करा, what is this showing? So a couple hours later, she comes back to me and she says, I think we see a tumor, and this appears to be fairly big, and this is stage 4. So now that I'm sharing this with a straight face, can you imagine what those words did to me, Uncle? And as I'm reading on my phone, my hands are shaking. Like, what is this supposed to mean? How did this happen out of the blue? So the first thing that comes to your mind is, "Hey, Guruji, ye kaise ho gaya?" Right? And the feeling of helplessness is the worst feeling to have. Because तुम्हें समझ नहीं आता तो कि तुम क्या करो और क्या बोलो और कहाँ जाओ. And you feel like, oh my God, this is an aspect that you can't control. You have no control over. कोविड का बहुत जोर था 2020 में, और कोविड भी जब शुरू आई थिंक मार्च टाइम फ्रेम में, फेब मार्च में शुरू हुआ था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी बिहाइंड इट बिकॉज एवरीबडी अप्रोच्ड कोविड लाइक यू नो विल शट डाउन फॉर 2 to 4 weeks. Nobody knew the impact. Nobody knew how long it's going to continue. Nothing. So all that is happening. I get this news. I don't know how to process this news. And also, I felt more handicapped because I didn't want to tell my parents. So imagine I find out about my dad's disease first and foremost, even ahead of him finding out. So there's this weight on my shoulders कि मेरे पास ये एक भार है, एक सच्चाई का भार मेरे ऊपर है, मैं उनको ये बता नहीं सकती because I'm going to shatter my father. किसी को भी तुम बोल दो कि ओ तुम्हारे को stage 4 कैंसर है, और फिर तुम डॉक्टर से प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते हो कि इसका मतलब क्या है, and they say, oh, it could be days, it could be weeks, it could be maximum 6 months. So sorry uncle, I was getting a call in between. And you can hear me still, right? आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकल, आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? I think you're audible. Okay, thank you. So you know this happened, and you know what I did in that moment, uncle? I looked at Guruji and I repeated these words to him कि गुरुजी, अपनी रजा में रहने की शक्ति भी आप दोगे. Correct. अगर आपने ये दिया है, और हम कहते हैं कि जिंदगी का हर उतार चढ़ाव आपका दिया हुआ प्रसाद है, तो मुझे वो स्वीकार है, और मैं आपसे स्ट्रेंथ मांगती हूं कि जिस रास्ते भी आप लेकर जाओगे, एक मुझे आपका प्रेजेंस, मुझे हर मोमेंट आपका एहसास चाहिए. And look, we all come to this plane with a set duration. ये बाणी में भी लिखा हुआ है कि हमें जिंदगी बाद में मिलती है, मौत पहले मुकर्रर की जाती है कि इस सोल को इतनी सांसें देकर इतने टाइम के लिए हम भेज रहे हैं. So life is not computed in weeks and days and months and years. बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से ये इसका वो फिक्सेशन हो जाता है. आपकी श्वासें लिखी जाती हैं.
और इमेजिन करो हमारे सामने द बिगेस्ट रियलिटी इज डेथ, येट जब हम डेथ की बात सुनते हैं ना अंकल, हम अंदर से हिल जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है। तो जब 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 आपको गुरुजी का सहारा नजर आता है ना, जब आपको ट्रूली, जैसे गुरुजी कहते थे कि हर एक के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, पड़ोसी के अंदर, आसपास वालों के अंदर, हर एक के अंदर उतना सा शिव का अंश जरूर है, जितना जो हमारी सोल होती है ना। गुरुजी ने समझाया था कि हमारी सोल उतनी सी होती है जितनी एक माचिस के तीले की ऊपर जो काला हिस्सा होता है ना, दैट बुरा, वो होता है हमारी सोल का साइज। और वो सोल हम सबके अंदर है, तभी हम सबके अंदर शिव, हम कहते हैं हर एक के अंदर शिव का अंश है। इसलिए वो स्लोगन भी बना, हर हर महादेव। जब हमारे अंदर से शिव निकल जाता है, हम बन जाते हैं शव। So when we truly start to realize that शिव का अंश हमारे अंदर, no worries, when we truly start to realize ना अंकल, that वो शिव का अंश मेरे अंदर है, तो उस एहसास के साथ जो आपके अंदर विश्वास की चिंगारी जागती है ना, एक फेथ जागता है, एक अंदर शक्ति जागती है, फिर फियर का इम्पैक्ट कम और कम और कम आपके अंदर होता जाता है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ फेथ यू नीड टू होल्ड ऑन टू, दैट नो मैटर what I'm facing in my life, whether it's personal, it's professional, it's emotional, it's health related, it's finance related, does not matter. He is within me. And that is the kind of faith I need to invoke at that time. And that is the only thing that'll see you through, uncle. Correct. I interrupt your viewpoints. आंटी, मनुष्य लालची है, हर वक्त सुख चाहता है, आनंद चाहता है। मालिक सुख दे तो खुद खुद को भूल जाता है। अगर मालिक दुख देता है तो भगवान को भूल जाता है। ऐसे में आंटी, हर हाल में मनुष्य का सिमरन और विश्वास एक साथ बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? अंकल मेरे हिसाब से सुख और दुख, जो मर्जी आप कह लो, इट्स योर ओन पर्सपेक्टिव। बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है, वो आपका खुद का नजरिया है। आप कई बार ये आजमा के देख लेना अपनी लाइफ में कि आप सेम, आपकी सिचुएशन सेम, आपकी प्रॉब्लम सेम, आपके आसपास वाले सब सेम। अगर आप अपना नजरिया, अपना लेंस, अपना पर्सपेक्टिव बदल के देखो, तो वो होता है ना, ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, वो वाली बात है। तो सुख एंड दुख are two sides of the same coin, and it all depends on how we choose to look at things. Now, if you talk about the tools and techniques for dealing with something like that, so many a times, things happen. हम इंसान हैं, हमारे अंदर वो 5 चोर, those 5 vices, degrees vary, but सब में है। Let's accept that. ईगो की बात कर लो, ग्रीड की बात कर लो, एंगर की बात कर लो, जिस चीज की भी बात कर लो, वो 5 चोर अप टू द आईबॉल्स भरे हुए हैं। How do we start to cope with all these things on a daily basis? So certain tools and techniques that I can think of is that, and we need to, I think, instill this early on, even in our kids, the next generation, so they're able to cope with this pressure. Remember to sit in silence every single day. And when I say sitting in silence, you're actually in touch with your inner self, and you've been able to silence all the noise around you. That's the time when you'll find the deepest answers that you're looking for. Like I said, everything is within. The Shiv is within. We need to find a way to untap that. So sitting in silence every single day is a must. Being able to connect with nature around you. Uncle, it's actually therapeutic. Being able to do that. तीसरी चीज,
जो गुरुजी भी इस पे बहुत एम्फोसिस देते थे कि शुक्राने की आदत डालो, ग्रैटिट्यूड की आदत डालो, दुख में भी शुक्राना करने के लिए स्ट्रेंथ, शक्ति, जैसे कहते हैं ना, वो स्पाइन मांगो। अगर गुरुजी से कुछ मांगना भी है, so make sure we have that ability, that capability within us, that no matter what happens and how, you know, hassled we feel or how shook up we feel, we are able to do shukrana, and that will only come, uncle, when our mind plays tricks. Our Correct. mind is the biggest barrier that we have. Yes. If we are able to tell ourselves that, okay, this moment happened, but this moment is actually exactly how it is meant to be. जो इस पल में हुआ was exactly how it was supposed to be. So what you're doing, you're sending a signal to your brain where you are not in a fight. You're not in a tussle anymore. You're not in the if and but and could have and should have. You have completely accepted the current moment. That's step number one. When you do that, you are able to actually tap into what is this moment trying to teach me? Why did this happen? So that based on your present, you can make some informed decisions about your future. Right? And this is, you literally have to train your mind and you have to train yourself to have a perspective that is positive and not negative. Because you know what happens? Being miserable comes naturally to us. Starting to complain comes naturally to us. Yes. Starting to blame comes naturally to us. But what does it get us? Nothing. But when, if there's a saying, if you want different outcomes, do different actions. Yes. So that's what you need to start doing. First, accept the moment as it is. That, okay, whatever happened is exactly what is supposed to happen. Now how do I respond to that? Feelings and thoughts are like visitors. They come and go. Yeah, they come and go. Watch yourself. Watch when you sit in silence. Watch what enters your mind and what leaves your mind, and watch it like a third person. Correct. So, and this is, uncle, an exercise that one needs to do, and your perspective to things will never change overnight. It takes a lot of intention. It takes a lot of awareness to do that. But these are documented tools and techniques to sort of combat situations where you are drowning in negativity and drowning in depression and you don't know how to respond. Very simple, all homegrown, and all starts from ourselves. We go running helter and skelter, looking to find things outside, little realizing that we need to unleash and untap what's on the inside. Correct. So that's my perspective, uncle. And it all starts and ends with perspective. Very rightly said. It is a continuous process. One has to train one's mind in different situations. I fully agree with you. Yeah. Thank you, Lord. Aarti Aunty. Thank you. Thank you. I really enjoy this. Is like food for soul. Yeah. And such invigorating conversations actually forces us to think. And if there is anything that we've spoken about that may help another, I think we've made I think a dent at the right place, and we are headed in the right direction. It's all about giving back and giving back selflessly. So thank you for giving me this opportunity, and I appreciate this time. Thank you, Lord Aunty. Jai Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji.